Hello students, the question is, the width of one of the two slits in Young's double slit experiment is d, while that of the other slit is xt. If the ratio of the maximum to the minimum intensity in the interference pattern on the screen is 9:4, then what is the value of x? Assume that the field strength varies according to the slit width. The given options are option 1 is 2, option 2 is 3, and option 3 is 5, and option 4 is 4. So the problem is based on the topic Young's double slit experiment. And the basic concepts which we have to use here to solve this problem is, first concept which we have to use is this, that the intensity is directly proportional to width square. This concept which we have to use, and the ratio of the maximum the minimum intensity is given by the expression square root of I1 plus square root of I2 whole square divided by square root of I1 minus square root of I2 whole square. Now, first of all, let us calculate these values square root of I1 and square root of I2 respectively. Now, according to the given condition that intensity is directly proportional to width square, we can also write it in this form as intensity is equal to some constant multiplied by width square. Now, instead of constant, we can also take this constant as k square also for the simplicity of the problem. To simplify the calculations, we can take this constant as k square. So, in this way, first we can calculate the value of square root I1. So, square root I1, for example, we take this I1 corresponding to the second slit, that is xt. So, that corresponds to the width of xt. So, this becomes square root of I1 becomes square root of k square into xd whole square, because the width is xd, so it's square. So after solving it, this becomes k times xd. This is square root of I1. Similarly, we can calculate I2, square root I2. So square root I2 is k square multiplied by d square in square root sign. So this comes out to be this k multiplied by d. Now putting the respective values of square root of I1 and square root of I2, for example, call it as equation 1. So we put the values of square root I1 and square root I2 in equation number 1. So I max upon I min ratio, which is also given in the problem. This ratio is given as 9/4. So putting this value 9/4 here, and the value of square root I1 and square root of I2 in equation 1. So this comes out to be k times xd plus k times d upon k times xd minus k times d and its whole square. Now after solving this k cancels and this d cancels. So we get this expression as x plus 1 upon x minus 1 whole square. Now taking the square root on both sides, we get this value as 3/2 is equal to x plus 1 upon x minus 1. By taking the cross multiplication, by doing the cross multiplication process, we get this expression as 3 times x minus 1 is equal to 2 times x plus 1. So in this way, we get this expression as 3x minus 3 is equal to 2x plus 2. Solving it further, this 2x goes in the left hand side. So this becomes x is equal to 5. So the value of x is 5 here. Option 3 is correct here. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई, इसमें कहा गया है कि एक पर्टिकुलर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक पर्टिकुलर स्लिट की विड्थ जो है डी है, तो दूसरी स्लिट की विड्थ एक्स डी है. अगर रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का दिया हुआ है जो कि स्क्रीन पे मिलता है 9:4 का, तो उस कंडीशन में x हमें बताना है. तो यहाँ जो कंसेप्ट यूज़ किया जाना है वो ये है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ के स्क्वायर के. तो अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना हो तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना होगा. कैलकुलेशंस आगे हमारी आसान हो जाए, इसलिए हम बजाय के रखने के स्क्वायर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो बेटर है इसे हम के स्क्वायर रखें ताकि स्क्वायर रूट लेने के बाद ये के की फॉर्म में दिखाई दे और ईजिली जो है वो कट हो जाए. उसके बाद हमें जो दूसरा फॉर्मूला, जो दूसरा कंसेप्ट हमें यूज़ करना है यहाँ पे, वो है आई मैक्स अपॉन आई मिन. वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर. यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर रूट I1 और स्क्वायर रूट I2 की वैल्यूज पुट करेंगे गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली.
हमें दिया गया है जो वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली तो हमें ये वैल्यू निकल के आती है k टाइम्स एक्स डी, स्क्वायर रूट i1 की वैल्यू, और स्क्वायर रूट i2 की वैल्यू निकल के आती है k टाइम्स d। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। आई मैक्स अपॉन आई मिन रेशियो में दे रखा है 9:4, वो हम पुट करेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम यहाँ पे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में 3/2 आता है, राइट हैंड साइड में x प्लस 1/x-1 आता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और x की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, तो x की वैल्यू निकल के आती है 5। सो द आंसर इज 5, विच इज ऑप्शन 3 हेयर। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।